Good morning, friends. Welcome to the session. So yesterday we saw that Monday को market gap down खुला and throughout the day market ने एक range bound movement दिया. So एक चीज दर्शाता है कि अभी market का जो pressure है range bound का वो intact है. Let me put my mobile on silence. Yeah. सो रिजल्ट सीजन आउट है, हेवीवेट्स के रिजल्ट्स आ गए, उससे मार्केट में कोई भी एक ब्रेकआउट लेवल पे सस्टेनेबल आया नहीं है. सो मार्केट इज स्टिल इन अ ट्रेडिंग जोन और ये ट्रेडिंग जोन भी एक वॉलिटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग जोन है, विच मीन्स खुलता नीचे देन इट गिव्स अ स्पाइक. So it's all about the short term nature of the trading right now. But before I start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So I have to just some issues today. I don't know why the PPT is not opening. Just give me a minute. Yeah, good morning, IB Mathematics. You're not regular, sir? Yeah, it's opening. So I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So let's start. First, let's see the global headlines, which says US stock steady with Iran tensions. फिर से ईरान start हो गया. Mega cap tech earning in focus. So, like we have a result season now. You are regular. So yesterday the Dow Jones was down 0.5%, 300 पॉइंट नीचे था. अभी US futures up है थोड़े बहुत. So it's more of a flattish market, जिससे ग्लोबल क्यूज में हमें कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं आता है. ऐसा रहता है तो आपकी जो मार्केट है ऑन इट्स ओन प्राइस बेस्ड पैटर्न्स और एक्शंस पे ट्रेड करती है. सो यू शुड फोकस ऑन योर ओन मार्केट्स. ये हम इसलिए देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट या अपसाइड तो नहीं हुआ विच कैन अफेक्ट इट. सो मोर और लेस इट्स माइल्डली ग्रीन सब जगह. एशिया देख लेते हैं. निकाई 600 पॉइंट प्लस है, ब्राजील 400 पॉइंट माइनस है, चाइना थोड़ा बहुत अप है. सो देयर इज नो नेगेटिव आउट देयर एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न्ड. After that, one by one, we check. There was a tension in Iraq, the headline says. तो एक बार crude को check करते. Let's go and check crude. Yeah, if I see crude oil futures right now, देखिए क्रूड में हमने एक लेवल देखा था, which was this gap. मैं गैप पे तो बहुत भरोसा रखता हूँ. नाउ यू ऑल नो अबाउट इट. ये कैंडल अभी तक क्रूड ने क्रॉस नहीं किया. गेटिंग माय पॉइंट. बट मोर और लेस क्रूड ने एक बेस भी बनाया. सो लेट्स सी विच साइड क्रूड्स ब्रेक. और हियर यू कैन ड्रॉ अ वेरी नाइस चैनल ऑन क्रूड. Yes. So you have 1, 2, 3 touch points on the down, 2 on the upside. So ये clear एक channel बन गया crude में. So now crude is likely to remain in this channel. Break of the channel will see another leg of the decline or crude is channelized. अगर channel है तो आपको volatility पता चल जाती है, which means the depth of the channel is 14%, 13.4. So crude में 14% का एक trading range establish कर लिया, वो either up and down, and that's how crude is. So crude में movement रहेगा. That's what the prices are showing. See, the purpose of pattern is ये नहीं कि दो line draw करो. The purpose of pattern is first measure the depth. Once you have measured the depth, देखो breakout के बाद ऊपर या नीचे कितना जाएगा. That will talk later when the channel breaks happen. Right now, we'll remain with it. Everybody clear why we draw the patterns? Shabaki says, I'm facing little bit in the stream. Everybody is getting audio, video loud and clear. After this, we go and check India VIX. India VIX, we check to see if something crazy is not happening either on the upside or on the downside. So this is the India VIX. I'll keep the drawings. Yesterday, it's still range bound. देखिए इंडिया विक्स ने कल yesterday एक स्पाइक मारा यहाँ पे. From there it cooled off. So इंडिया विक्स भी अगर देखने जाए तो एक रेंज में ही है. तो मार्केट भी एक रेंज में रहेगा और वही रेंज में मार्केट वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे करता रहेगा. बैंक निफ्टी 500-800 पॉइंट, निफ्टी 150 से 200 पॉइंट. बी प्रिपेयर्ड फॉर सच प्राइस मूवमेंट्स.
That's what charts are showing. India VIX is showing. After this, we go to Gift Nifty. गिफ्ट निफ्टी आई थिंक मोर और लेस देखिए 50 पॉइंट का जो गिफ्ट निफ्टी है ना उसको हम फ्लैटिश बोलेंगे. सो दिस इज गिफ्ट निफ्टी इज डाउन 100 पॉइंट्स. और टुडे देयर इज एक्सपायरी आल्सो ऑफ निफ्टी, सो बी अवेयर ऑफ दैट. द एक्सपायरी टुडे. सो मोर और लेस एक माहौल बन गया कि ग्लोबली इतना भी कोई नेगेटिव नहीं है. रिजल्ट्स आ गए, उससे कोई भी एक पॉजिटिविटी आया नहीं है मार्केट्स में. इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद, हेवी वेट्स के रिजल्ट्स आने के बाद एचडीएफसी बैंक, एक्सिस सब नीचे गए. सो मार्केट एब्जॉर्व कर रहा है रिजल्ट्स. उससे कोई एक स्ट्रेंथ का माहौल नहीं बना. एक चीज रिजल्ट से हुआ क्या, कोई भी एक स्ट्रेंथ का माहौल नहीं बना. तो बैक टू प्राइस एक्शन, बैक टू वॉलेटिलिटी, बैक टू एज अ स्विंग ट्रेडर. मार्केट में डायरेक्शन नहीं है. Jahin says ATM straddle price. Yeah, you want? I'll just check it out. So I'll just log into my platform. Yeah, just give me a minute. I'm just logging in. या स्टैडल प्राइस आप देख लो, मूवमेंट्स तो रहेगा आज और एक्सपायरी भी है आज निफ्टी की. एक बार स्ट्राइक्स देख लेते हैं. So if I go to options data, if I go to Nifty, and if I go to Nifty, ATM at 24,250, तो 74 और 65. सो कितना हो गया? 140 पॉइंट का स्टैडल प्राइस. जय हिंद इन्वेस्टमेंट्स क्लियर. तो 150 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट्स में. 99 पॉइंट तो नीचे ही दिखा रहा गिफ्ट निफ्टी. और ओआई स्टैटिस्टिक्स में इफ यू सी टुडे, कहीं ना कहीं पुट ओआई इज हाई. इतना भी हाई नहीं है, 13 और 18 में. इट्स नॉट मेकिंग दैट ह्यूज डिफरेंस. So now if I have to go to Nifty, let me check the OI part of it on a 60 minutes time frame. 60 मिनट्स में देखिए ओआई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा ओआई तो आपका 24,500 पे, विच इज 250 पॉइंट फ्रॉम द करंट लेवल्स. नीचे में पुट 24,200 पे है. लेट्स सी इफ इट टेक्स आउट देन 24,000 पे. तो मार्केट क्लियरली एक कॉन्डोर वाला था कि मार्केट 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे मेजोरिटी ऑफ द कॉल्स एंड पुट्स है. तो एक 250 पॉइंट की ऑप्शंस रेंज है और स्ट्रैडल प्राइस है 150. तो उससे होता क्या है ना. ओके, देन आई एम कमिंग टू निफ्टी. चलो आज आपने रेंज की बात कर ली, तो आई शो यू हाउ टू यूज दीज रेंजेस ऑन एन एक्सपायरी डे. सो आई गो टू फर्स्ट द 60 मिनट्स. This is the previous day's open. So 150 points, I would put it the straddle range, up and down. देखिए स्ट्रैडल रेंज तो बेयर मिनिमम है, उतना मूवमेंट तो एक्सपायरी के दिन आने ही आना है सर. गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज द स्ट्रैडल रेंज. आफ्टर दैट अगर ओआई में देखे तो 24,500 विच इज समवेयर हियर. एंड और हमने क्या देखा था, विच इज 24,000. 24. Yeah. So this is today's OI range, straddle price range for the market, and this is the OI range for the market. Everybody clear? This is how a day or two before the expiry you can fix the range. Then you know कि volatility का दायरा क्या है, ऊपर या नीचे. If everybody has understood how to plot it, give me a yes. This is what we do on a regular basis. Yeah, I need yes. Yeah, Vijay Praveen says yes. और वो हिसाब से चार्ट्स बने हुए सर. स्ट्रैडल प्राइस की रेंज पे आपका ये गैप का सपोर्ट है. और ओआई में
ये नीचे वाला गैप है, तो आप मोरलेस देखें प्राइस एक्शन और ओआई आज मैच कर रहा है, तो ये सपोर्ट वाला निकाल दिया। ऊपर में देखिए स्टैडल प्राइस यहाँ है, वेयर यू हैव द प्रीवियस डेज हाई और दिस गैप ओवर हियर, इसको ले लो एंड देन यू हैव वे अप हियर। सो ये काफी एक्सट्रीम हो जाएगा उसके पास, बट मोरलेस आप देख रहे हो जो ओआई रहता है वो प्राइस एक्शन के आसपास आ ही जाता है। नाउ गेटिंग इट, straddle price and the OI range, the market करीब यहाँ पे आया, then you trade plan accordingly. After that अगर 15 मिनट चार्ट्स पे जाते तो 15 मिनट पे भी मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मोर और लेस ओआई और स्ट्रैडल प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको चाहिए तो कल का जो गैप है, गैप ऑल्सो इज अ रेजिस्टेंस, वो गैप को ले लो। तो इमीडिएट टुडेज ओपनिंग ट्रेडिंग रेंज तो मैं स्ट्रैडल प्राइस को ही रखूंगा, उसके बाद देखते नीचे का स्लिप आता है, ऊपर का ब्रेक आता है। एवरीबडी क्लियर, मोर और लेस इट्स अ वेल डिफाइंड मार्केट टुडे। Got it everybody, or you need me to be Arhana? Okay, मोर और लेस आज मार्केट ने उसके बाद कौन सा लेवल तोड़ेगा वो आपको ओआई चार्ट्स पे स्ट्राइक डाल के रख दो, देन you'll come to know which side the break will be. After this we'll go to बैंक निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी डेली करता हूँ तो अभी तो बैंक निफ्टी में देखिए इनसाइड डे है, विच मीन्स ये लास्ट 2 दिन के लो सेम है, तो एक रेलेवेंस बनता, अगर 2 दिन के लो सेम है तो उसको मैचिंग लो बोलते हैं, और यहाँ पे प्राइस कंजेशन भी है। सो आफ्टर दैट लेट मी गो टू 60 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पे काफी गैप उतार चढ़ाव है, तो नो डाउट दीज लेवल्स विल आर योर लाइकली सपोर्ट। तो कल भी अगर देखो तो हमने सेशन में देखा था ये पिवट लेवल है, बट मार्केट खुला है उससे नीचे, तो कोई रेलेवेंस नहीं था ड्यूरिंग द डेज ट्रेडिंग। दिस लेवल वी हैड मार्क्ड, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, how many of you remember this level yesterday morning we had marked? Nobody remembers? Okay, so बैंक निफ्टी में देखिए हेमंत सेज यस, बैंक निफ्टी अभी भी ये रेंज से निकला नहीं है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, कल का जो गैप डाउन हाई है उसका मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, फाइन, विच इज 500 पॉइंट फ्रॉम द करंट प्राइस, और कल का लो का एक सपोर्ट रख रहा हूँ। और यहाँ पे हमने देखा था स्टैक ऑफ सपोर्ट, एक के नीचे एक, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, तो बैंक निफ्टी मोर और लेस ये रेंज में रहेगा। आफ्टर दैट विल कम टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए प्रीवियस डेज हाई को एक इंट्राडे ब्रेकआउट माना जा सकता है, अगर ये क्रॉस करता है तो टेंडेंसी ऑफ द मार्केट इज टू क्लोज द प्रीवियस डेज गैप, दैट इज ऑन द अपसाइड। अभी देखिए कल का हाई इज रेलेवेंट पॉइंट फॉर यू टुडे, तो इस तरह का आज का सेटअप है मार्केट पे। एवरीबडी क्लियर? And apart from that, I don't see anything more we should focus upon right now. देखिए गैप डाउन जब रहता है ना, तो आपको सपोर्ट पे ध्यान देना है। गैप डाउन इनटू द सपोर्ट इज नॉट अ नेगेटिव साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। रिमेंबर दैट, गैप डाउन होता है तो आप सब मंदी में आ जाते हो, डोंट डू दैट। सो जैसे यस्टरडे दिस वाज अ पिवट, आज मैं इसको पिवट मानूंगा। पिवट मतलब सबको पता है लेवल, सबको कोई लेवल पता रहता है, तो क्रॉस होता है तो शॉर्ट कवरिंग आता है, जिसने शॉर्ट किया स्टॉप लॉस ट्रिगर्स होते हैं। फ्रेश लोग ट्रेडर्स सोचते चलो एक ब्रेकआउट ट्रेड ले जो 50-100 पॉइंट हाथों हाथ बना लेके निकल जाएंगे, तो वो सारे लेवल्स को हम पिवट लेवल्स बोलते हैं, जो कि एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है एक स्पाइक के लिए। तो निफ्टी में पिवट लेवल आज का रेलेवेंट है, प्लस द यस्टरडेज लोज एंड प्रीवियस डेज हाई। So more or less markets are well defined today, I would put it that way। और ऑप्शंस है, एक्सपायरी है, 150 पॉइंट की स्ट्रैडल रेंज है और 250 पॉइंट की ओआई की रेंज है। एज द डे प्रोग्रेसेस आप ओआई बिल्डअप पे ध्यान रखो, कौन सी स्ट्राइक देखिए शिफ्ट हो रहा है वो आपको देखना। अभी आपको पता है पुट में 24,000 पे और कॉल में 24,500 पे। एज द डे प्रोग्रेसेस देखिए कौन से साइड शिफ्ट हो रहा है ओआई, जो साइड शिफ्ट हो रहा है, अगर पुट की साइड शिफ्ट हो रहा है
तो दैट मीन्स नीचे जा रहा मार्केट, कॉल की साइड शिफ्ट हो रहा, नीचे आ रहा, लाइक 24,500 से 24,400 300 में आ रहा, दैट मीन्स मार्केट और पास के रेजिस्टेंस बना रहा। तो वो आपको ड्यूरिंग द डे एज अ डे ट्रेडर you have to keep watching, and where you see that, you can see it in the Incred Money platform, in the Insta option. So आपको option charts पे you keep watching the strike price. So today the relevant one be 24,000, तो मैं 24,000 और कल का हाई पे डाल लो, कल का हाई जो है वो स्ट्राइक देख लो, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंबाइन टुडे प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट एंड द चेंज इन ओआई ड्यूरिंग द डे, राइट। So make sure you post a comment once I end the session. Your comments are very helpful. Daily I check it, and if you have noticed, I reply each and every comment of yours. So once I end the session, friends, please do put a comment out there. It's for us to understand how we can improve upon the sessions. So again, we'll meet in the evening at 8:45. That's all from my side. Thanks and have a nice day.